Hey, good morning. How's everyone doing today? It's different year and all that 2024, so happy new year. If you have been here before, you know the drill. हम लोग क्या करते हैं usually? If you're new, because practical chemistry gets a lot of traction, right? Maybe you're watching this video for the first time on this Aakash JEE channel. So as always, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत NCERT की what do you call it रिविजन करूंगा, थोड़ा सा उसको खोल के हम लोग देखेंगे. बट ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी में लैब मैनुअल में कुछ अलग 11 नोट्स हैं, राइट, चैप्टर्स बोल सकते हैं आप. बट ये सब जो है 3-4 पीडीएफ पेजेस के ही चैप्टर हैं, सो इट्स चिल. सो विल हम लोग उसको ऊपर ऊपर से देखेंगे एंड देन विल डू क्वेश्चंस एज यूजुअल, ठीक है. सो वेलकम टू दिस फैंटास्टिक न्यू ईयर अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 2nd January. या कैसा लग रहा है? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री? व्हाट्स अप युवराज? हे अनीता, खुशी, आई डोंट थिंक खुशी इज हियर. गुड मॉर्निंग अक्षिता, हाउ यू डूइंग? हे अक्षिता, aren't you from the NEET channel? Or is that a different? Oh, that was Rakshita, sorry. Yeah, got mixed up. All right, that's good to know. Charvi, long time, my God. Okay, hey Piyush, Principal Saab, a lot of people from who have not seen him before or for a very long time are back because of practical chemistry. That's lovely. Hey Priya, how you doing? So, हम लोग क्या करने वाले on this beautiful blue background? We're going to focus on practical chemistry. Where are we? We are right here on 2nd of January. So, what is the focus of practical chemistry and why is it that आप लोग इतना वर्कअप हो रहे हैं? ये बहुत सालों से है यार. जे एडवांस में तो है ही, जे मेन में भी हमेशा से था. मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पीवाईक्यूज हैं जो मैंने थोड़ा बहुत बदले हैं ताकि आपकी लाइफ थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो. ऑलवेज बीन देयर, बट आई थिंक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा अटेंशन मिल रहा है आजकल बिकॉज हो सब सडनली आप लोग सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिए, विच इज गुड. सिलेबस पढ़ना अच्छी बात है. सो ब्रॉडली केमिकल एनालिसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है. क्वालिटेटिव मतलब कि जो सॉल्ट एनालिसिस है वो मैंने नीट चैनल पे सेशंस किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. दैट वर्क्स फॉर जेईई एज वेल. इट्स द सेम थिंग, राइट, बिकॉज सिलेबस एग्जैक्टली द सेम है. जेईई एडवांस के लिए सिलेबस थोड़ा अलग है, उसके हम लोग अलग से सेशंस करेंगे. अगर आप जेईई मेन या फिर नीट दे रहे हो, इधर वे सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है. आई विल शो यू द सिलेबस क्विकली राइट आफ्टर दिस. क्वांटिटेटिव स्टफ तो यार मोल कॉन्सेप्ट है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. दैट तो यू लेस. क्वालिटेटिव क्या है वो भी हम लोग देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में है लिंक्स. ग्रेविमेट्रिक, टाइट्रीमेट्रिक, यू नो दिस. इसमें तो रेडॉक्स रिएक्शंस के आइडिया से हम लोग उसको कर सकते हैं. और या दिस अगेन इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो मैं आपको बताने आया हूं कि ये सब चीजें बहुत बड़ी बात नहीं है. एंड व्हाट विल डू, विल क्विकली लुक एट द सिलेबस. और सिलेबस के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अच्छा, अरे यार मैंने इसको अभी फिट तो किया था, ये भाई साहब कहाँ चले गए? विंडो लगता है मिनिमाइज हो गई. वन मोमेंट, हाँ, कहाँ गई विंडो? विंडो यहाँ पे है. खुल जा सिम सिम. ओ गुड लॉर्ड, हमेशा ऐसा होता है. ओके, नाउ यू विल से दिस. सो ये लिंक मैं आपको दे देता हूं अभी. दिस इज द लैब मैनुअल का लिंक. ओके, प्लीज इसको पढ़ लो. अगर आप एक्चुअली लैब में गए हो देन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बी अ लॉट इजियर. इफ यू हैव नॉट गॉन टू अ लैब, आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स हु डोंट गो टू लैब्स इन द लाइफ एवर, बट फिर भी जेई देते हैं, ठीक है, उन लोग को देख लीजिए. प्रणाम सिंगर श्लोक, व्हाट्स हैपनिंग? यूनिक, युवराज वंस अगेन. 98 camera, all right, lot of new people. So yeah, this is what I'm going to look at, right? Primarily ये है आपका लैब मैनुअल. यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित इसलिए लिखा है बिकॉज जो लिंक मैंने आपको दिया है उसी लिंक से आप इसको खोल सकते हैं. यू विल सी इफ यू गो टू ग्रेड 12 ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या कोलॉइड्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब 10 चीजें हैं. अब व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस, व्हाट आर वी रिवाइजिंग एंड डूइंग दिस? देखो, ये जो ग्रुप 13 यहाँ पे लिखा है, दिस इज द सिलेबस, राइट. दिस इज, ये मैंने सिलेबस जेईई वाले से ही साइट से, एनटीए से डाउनलोड किया है. ये वाला पार्ट यार, डिटेक्शन नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्वालिटेटिव एंड ऑल्सो क्वांटिटेटिव, ठीक है. These are the ideas we'll look at. Sure, Nitika also is going to be doing organic वाला part in detail. मैं broadly inorganic और physical वाले parts cover करूंगा. थोड़ा बहुत में 1 or 2 जो theoretically organic में है but actually mole concepts हो सकते हैं, वो हम लोग चीजें देखेंगे. दूसरी बात क्या है? ये principles related to practical chemistry. We will cover stuff over here. Nitrogen, sulfur, halogen, detection, or also, you know, ये वाले parts Nitika ji will do because this is hardcore organic. I'm going to focus on all of this. And you will see very quickly कि ये सब चीज तो हम लोग थियरी में कर चुके हैं, बट वी लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है. दिस व्हाट वी गोना डू. एंड ये वाली बात तो यार थर्मो से आती है. आर यू एबल टू सी दिस क्लियरली? या सी दिस राइट हियर, दिस इज थर्मो, दिस इज आल्सो थर्मो. ये कोलॉइड्स चैप्टर से है. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज टाइट्रेशन एंड ऑल ऑफ दीज आर देयर. ओह, ये मेरे पीछे चला गया, सॉरी. All of these are there in your lab manual. Okay, that's what I'm trying to prove to you. So, पहला unit, let's go over that very, very quickly. Happy New Year. Oh yeah, everybody. Sure. Hey Nidhi, welcome. Happy New Year. अरे वाह, युवराज ने सारे क्वालिटेटिव प्रैक्टिस किए हैं. Then your life will be very easy. Hey Labhansh, what's happening? Hey, what's happening? All right, sweet. After so long. All right.
यस लाभांश, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ठीक है, नाउ ऑल्दो आपके सिलेबस में थियोरेटिकली व्हाट हैज बीन रिमूव्ड, कहां गया ये some stuff has been removed है, यहाँ पे surface chemistry है ही नहीं, बट ये वाला पार्ट आप प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। व्हाट इज अ डिस्पर्स्ड फेज, व्हाट इज डिस्पर्जन मीडियम, पढ़ लीजिए। लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफोबिक सॉल्ट क्या होता है उसको पढ़ लीजिए। एंड व्हाट्स इन योर सिलेबस इज ऑल ऑफ दिस, you've got starch, you've got arsenic sulfide, all of this, to have a general idea of this, ठीक है। इसको completely skip मत करिए, okay। what else is here, kinetics वाला पार्ट तो आपके सिलेबस में है, plus these titrations I think they fall a little bit into organic वाला realm, look at this, yeah, you got this reaction right here which is just a general thing of S2O3 minus, and this one is in your syllabus, okay। जो टाइट्रीमेट्रिक चीजें लिखी थी, yeah, this right here, let me zoom in if you can see this clearly, मैं दूसरी तरफ आ गया हूं, right? let me move to the other side so you can see this better, hold on, हम आ जाते हैं इस तरफ, अरे आइए भाई साहब इधर आइए, move, oh good lord, we're gonna do this man, oh my god, yeah that's better, okay ठीक है, yeah, I've just moved this on the other side so you can see this better, okay। So ये parts are from redox reaction ना, देखो iodide ions बन रहे iodine, then you'll detect this with starch, we have covered this in the theory session, but अगर आप नहीं किया तो यार पढ़ लो, it's nothing, no big deal, ठीक है। all of this is hey Ritesh, Hare Krishna, happy new year, but have you guys read NCERT? Please, can you please tell me on the comments if you are going through this, have you seen any of this before or first time? It's okay, be open with me, right? अगर आपने पहले नहीं देखा डोंट वरी अबाउट इट, अभी देख लो, ठीक है। इसको क्लॉक रिएक्शन बोलते हैं, इस पे थियरी पे भी सवाल आ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट्स, दिस सॉरी थर्मोकेमिकल मेजरमेंट्स का बहुत सिंपल चीज है, राइट। दिस इज व्हाट द होल ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, ओके। लाइक यू हैव अ रिएक्शन इन हियर, इससे कुछ हीट निकलती है यूजुअली, लाइक अ हीट, सम हीट इज इवॉल्व्ड, एंड हाउ डू यू मेजर दैट हीट, इट हीट्स अप दिस water or anything else, कुछ भी और भी हो सकता है, but right now we say it heats up water, and yeah, it raises the temperature of this, okay, temperature rises over here. So what do, you heat 1 is equal to heat 2, that's all you got to do. So mc delta t is equal to s delta t whatever, delta t1, ये delta t2, or actually it could be the same, it doesn't matter, but basically सब चीज यार थर्मो का ही है, बेसिक थर्मो है which I've covered। अरे यार अब ये दूसरी तरफ आ गया, hold on, I'm going to move to the other side now. That's what we're going to keep doing in this. ठीक है? NCERT making amazing lab manuals as always. Don't mug this. Don't get scared. ये सब mug करने वाली चीजें नहीं है. This is just heat. Okay? Heat का heat in equal to heat out. That is all is being said over here. इसको mug मत करो, बहुत जरूरी है। First principle तुम आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है? So please, please, please don't mug this. Okay? अगर आपको लग रहा है तो नई चीज है तो इसकी PDF कहाँ मिलेगी? रितेश यार रितेश यहाँ मिलेगी, NCERT से मिलेगी। नॉट डन फर्स्ट टाइम, अरे धोनी साहब पहली बार, अच्छा रितेश यार देखो वहां मिलेगी पीडीएफ, मैंने लिंक आपको दे दिया है, दैट लिंक इज राइट हियर, सी दिस लिंक, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द लिंक, आई थिंक वो लिंक बाहर चला गया, होल्ड ऑन, नाउ यू शुड हैव सीन द लिंक, राइट, ncrt.nic.in साइंस लैबोरेटरी मैनुअल, यहाँ पे जाके 12th ग्रेड में जाओ, यहाँ पे करो ठीक है, यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम हियर, there yeah sure fashionably late, it's okay, don't worry about it. The reason I'm not going to upload this on what do you call this Telegram is because I'm not going to upload 12 PDF यार, like come on, ये तुम लोग पढ़ लो प्लीज, इतना भी लेजी मत हो लाइफ में, and all of these things are an extension of electrochemistry, right? इस वाले चैप्टर में देखो everything here is very direct, right? This is just Nernst equation, तो कुछ नया नहीं है, okay? A lot of this you may feel like अरे ये कहाँ से आ गया, but it's everything you have done before. I think the only couple of things that are new is, अच्छा ये तो हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं, राइट, टाइट्रोमेट्री के बारे में बात कर चुके थे कि this I want to talk about, right? This part is in D block. How is it in D block? देखो, you say that when you use this as an oxidizing agent, you cannot use it in HCl or क्या बोलते हैं दूसरा वाला HNO3, right? You can't use it here because both of these have a very strong oxidizing agent. And भाई साहब इसी को I mean this is a very strong oxidizing agent, so it will oxidize chlorine over here, chloride ions. So that's why you use H2SO4. इस पे भी theory सवाल आ सकता है by the way. Yeah, maybe it's in redox, but specifically इसमें बहुत डिटेल में ये सब दिया हुआ है. Oh by the way, in a previous year paper, I remember very clearly कि यहाँ पे जो आए थे आपके पोटैश एलम वाली चीजें, hold on, जिसको all the way to the bottom, yeah, डायरेक्टली पूछा गया था कि कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं. This above my head. One of the numerical entry questions in the previous year papers was this कि देखो ये हो रहा है तुम्हारा पोटैश एलम, कहाँ है ये एलम ही है ना, क्या है हाँ, सो एलम इज रिएक्टिंग विद KMnO4 और उसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल होते हैं. यू कैन सॉल्व इट, इट्स नो बिग डील, बट सॉल्व करते करते कभी आपको डाउट होगा
कि यार 68 molecules, how is the answer possible कि 68 molecule हो सकता है? But if you have seen this before, you be confident with the answer, and that's also important to be confident about what you're doing. कभी कभी हम लोग अपने सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, which is not a good thing. खैर, just trying to prove to you कि जो भी चीज है, मैं what am I talking about right now? I'm going to go back to the syllabus and ये वाला part देखो कहाँ गया ये देखो KMnO4 versus अरे more salt versus KMnO4 and oxalic acid versus KMnO4, वो दोनों वहीं पे थे, self indicator है, and you use H2SO4 over here because the other acids would oxidize it. Trust me यार, at least in one of the 8 sessions ये सवाल 100% आएगा. I'm not saying this just as a way to say कि देखो मैंने बोला सवाल आएगा, because that's what JEE does. They ask these kind of things, बार बार पूछते हैं, ठीक है, from data. It's not hubris, it's from data. खैर, focusing on things that you may have already done, qualitative analysis. We've got multiple things over here. Yeah, ये सब आपके syllabus में है. There is group 0, अरे कहाँ गया? 0, 1, 2, 3, 4 right over here. And then there's 5, etc., etc. Then group 6. Group 6 में ammonium है. कहाँ है? That's what's here. Anions में all of these are in your syllabus. First thing is कि Ag से precipitate होता है. Then that's like a basic test. And oh, BaSO4 is the precipitate, and that is for sure tell you कि sulfate ions है, etc., etc. खैर, I don't think we can spend too much time on this now. Do you want me to go over this at all? Have you seen that P by Q? Acha, Shlok, that's great. Your favorite P block, Nidhi, that's lovely. Yes, Meghu, it is on D block as well. Yeah, exactly, Shlok. Awesome. Bradya. Dheeraj, you're not able to understand anything because आपने NCERT नहीं पढ़ा है. This is a revision session. अभी JEE है 15 दिन में. अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है लाइफ में तो यार skip कर दो. ठीक है? I'm being very straight with you. Please बुरा मत मानना मेरी बात का. This is a revision session on practical chemistry. अगर आप बोल रहे हैं यार समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है. अगर पढ़ाई नहीं की है, skip. अभी लास्ट 15 दिन में नई चीज मत पढ़ो. That's also advice for you. ठीक है? अगर आपको बुरा लगा, यार this is life. Okay? पढ़ाई करनी थी, अच्छी बात है, कर ली, नहीं की, move on. It's, you know, as you reap, so shall you sow. No, उल्टा था, as you sow, so shall you reap. खैर, आगे बढ़ा जाए. समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. That's what I'm trying to say. And all of this is there. ये जो सब चीजें आपको लगता है डरावनी वाली, look at how much detail is there यार. ये सब NCERT है. मैं आपको सब लोगों को बोलता हूँ NCERT पढ़ो. आप लोग बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, Vogel and all that. Have you read NCERT? प्लीज पढ़िए इसको, कितनी डिटेल में दिया है, और इससे डायरेक्टली चीजें आती हैं इन द JEE एग्जाम. हैज कम इन द पास्ट, फ्यूचर में भी डेफिनेटली आएंगी. एनीवे, yeah, the last part of this sort of thing is the test for functional groups of organic compounds. Right? Broadly यहाँ पे कैरियस टेस्ट होता है जिसमें हैलोजन और सल्फर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. We'll talk about that in the question, right? Since I have a couple of questions that I would not talk about that right here. And you have the iodoform test जहाँ पे अच्छा अल्फा पे कार्बन होना चाहिए, स्पेसिफिकली जस्ट वन कार्बन. आयोडोफॉर्म टेस्ट में, आई मीन आई एम गोना राइट दैट डाउन हियर. आयोडोफॉर्म में मतलब you have the formation of CHI3, right? That's only going to form if you have a CH3 group attached to either a ketone or a secondary alcohol, right? If you're wondering why I'm not writing the whole structure, because I suck at organic chemistry, so I don't want to tell you something weird. Please attend Nitika's classes to go through all of this properly. ठीक है? खैर, let's get started. I think हम लोग सेशन शुरू करते हैं. Carbohydrates, fats and proteins, you have tolerance and क्या बोलते हैं, Felling's test. And this is also not a big deal. The reason why I am covering it because it is redox reactions. Look at this. Look at this. Silver is getting reduced. तभी तो यहाँ तुम्हारा बन रहा है silver mirror test and all of that. Like you get a slide mirror right over here, right? खैर, you can say कि हाँ ये organic है and maybe not a part of physical chemistry, but dude, redox reaction हो रहा है, so I can call it physical chemistry. Then it gets a little scary. This is the part I'm not going to cover. This is the part Nitika is going to cover because it's hardcore in organic chemistry. Shall we start the session? Shall we start some questions here? Yeah? How you guys feeling right now? Methyl ketones? Absolutely. Your secondary alcohol. Shlok. My God, Shlok. Yes. On the money right there. Krishna Aditya, pranam. Hitesh. तेरे को मैं बोला तो. Is the same Hitesh asking फिर से? अभी कोई और पूछ रहा है. Yeah. Hitesh from Jharkhand. Okay, cool. Hitesh bro. पढ़ तो लिया कर. You are asking me 10 times, but I've given you the answer. There you go. You can get the PDF right there. Yeah. ये लिंक है हितेश, दैट्स मी. आकाश भाई JEE इज मी, वो मैं डाल रहा हूं वहां पे लिंक. ठीक है, वहां पे जाओ. ठीक है. रेणुका, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर इन द सिलेबस. यू कैन लुक एट द सिलेबस राइट हियर, रेणुका. या, लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हियर हैव नॉट सीन द सिलेबस. हियर यू गो. सिलेबस. धैर्य लाइक, धैर्य में धैर्य नहीं है. यस सर, स्टार्ट क्वेश्चंस. वील स्टार्ट क्वेश्चंस. एनी अदर लिंक you guys want? Here is the last link that may be useful to you.
the sessions that I've generally worked on, and this has practical chemistry, etc., etc. PSC में बस सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चन नहीं बनते. तनिष यार सॉल्ट एनालिसिस सबसे आसान है. आई विल प्रूव टू यू. सॉल्ट एनालिसिस सबसे आसान है. डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत ढेर सारे इस पे मतलब 4 सेशन के नोट्स हैं एटसेट्रा है. इट्स ब्यूटीफुल. सॉल्ट एनालिसिस इज वेरी डूएबल. आई फील वो सबसे आसान है. बाकी चीजों में यू हैव टू स्टडी 10 थिंग्स. सॉल्ट एनालिसिस इज लाइक इन इटसेल्फ कंप्लीट, राइट? उसको आप सेपरेटली पढ़ सकते हो. बट सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा मुश्किल भी है बिकॉज इट यूजेस दीज आइडियाज. विल डू टॉक अबाउट. हम लोग करते हैं, अभी करते हैं. ठीक है, केएसपी आएगा और 10 चीज आएंगी. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. अरे होल्ड ऑन, ढूंढा जाए स्लाइड्स. ओके, पहला सवाल इतना सिंपल सवाल है, बी लाइक आर यू सीरियस? हाँ भाई, ऐसे ही सवाल आते हैं जेई में. देखो, इन जेल्डाल्स मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल, ammonia evolved from 0.35 gram of the sample was neutralized by 10 ml of 1 molar H2SO4. How do you find the percentage of nitrogen in the soil? Do it, and I'm here to prove to you कि आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है to be able to do this question. This is from first principles. From mole concept आप इसको कर सकते हो. ठीक है, and I'll prove that to you. I'm sure there are formulas that coaching institute make you mug. My job is to tell you कुछ मग करने की जरूरत नहीं है. हम लोग करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से और 100% सही करेंगे. दैट्स द गोल. सो ट्राई इट आउट. ट्राई इट आउट प्लीज. हितेश, आई होप यू फिगर्ड आउट व्हाटएवर यू वांट. या तनिष, अबाउट सॉल्ट एनालिसिस यू नीड टू नो केएसपी का थोड़ा बहुत आइडिया, आयोनिक इक्विलिब्रियम का आइडिया, टू बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर द कैटायन एनालिसिस. एनायन वाले करने के लिए वेल मोस्टली हमारे सिलेबस में जो है जेई मेन के लिए लाइफ चिल है. 4-5 ही है, राइट? यू हैव NO3 माइनस गिव्स यू द ब्राउन रिंग टेस्ट. बाकी जो हैलाइड्स हैं दे विल ऑल प्रेसिपिटेट विद Ag. NO2 माइनस का और CaCO माइनस का थोड़ा अलग है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. लुक एट माय सेशन इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल बी एबल टू फिगर दैट आउट. ओके, आंसर्स बताइए. ओह, ऑलरेडी आंसर्स दे रहे हैं. ओके ओके. 37.3. हाउ ब्रो? निधि, व्हाट? निधि, व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? रेणुका, yes, thank you for that very very quick answer. Loving it. तरुण यादव, फॉर अ गुड कॉलेज आपको बेसिक्स करने होंगे. ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज लाइफ फॉर अ सेकंड. Yeah, for just 1 minute. I want till the rest of you solve this because a lot of people ask me this question, and I'll give you the most relevant answer. Renuka says 80, Dheeraj says 80. What about the rest of you? Tarun, यार कॉलेज सब अच्छे होते हैं, ठीक है. I know a lot of people throw a lot of shade on some colleges, but if you're going to top wherever you are at, it's good. You focus on your prep. पहली बात है. दूसरी बात, भाई चीजें बेसिक से करो. If you're going to try and do hacky ways of solving things, कॉलेज में तुम लोग रो दोगे, ठीक है. There are hacky ways to do things in college and in job and life as well, but you will enjoy things a lot more if you do things in first principles. जितना कर सकते हो करो. Everybody cannot top. Yeah, it's a fact of life. So focus on what you're good at and उस पे आप ठीक से करो. About this, कितने मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम, I don't know यार. You figure it out. ऑनलाइन बहुत चीजें आपको बताती है. मेरा फोकस लाइफ का वो नहीं है. मेरा फोकस ये नहीं है कि इतने मार्क्स पे ये ग्रेड आएगा. आई हैव नेवर डन दैट इन माय लाइफ. तो वो फिलॉसफी मेरे डज नॉट लाई विद मी. ठीक है, प्लीज बुरा मत मानना इस चीज का, बट जस्ट समथिंग दैट आई थिंक. ऑलराइट, सो लॉट ऑफ यू सेइंग 80, सम ऑफ यू सेइंग 60, 65. यार 0.3 कैसे आ रहा है? मैंने नंबर्स ऐसे दिए हैं कि ताकि तुम्हारा कुछ पॉइंट ना आए यार. आई हैव गिवन यू नंबर्स सो दैट तुमको डायरेक्ट चीजें आए. 87 महेंद्र सिंह धोनी. ओके, हाँ तो तरुण वो देख लेना यार. मतलब हाउ इज माय इनपुट गोना चेंज दैट? दैट इज अ फैक्ट. इफ देयर समथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड, आस्क मी. इफ यू वांट टू आस्क मी रैंडम थिंग दैट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, प्लीज यार गूगल कर लो. हाउ डू आई हेल्प यू देयर? ठीक है. 80% say a couple of you guys. Okay, how do you guys arrive at this answer? Can you please tell me? Pratham, good job. Hitesh, Mahindra Singh Dhoni ji saying 87. Dhoni ji, pranam. Number 7, the original 7, more than the CR7. Dhairya, how did you guys get to this answer? Hitesh, आप 65 बोलो, you change your answer. Okay. 80 perfect, no decimals. Yes, Dhairya, exactly. ये सवाल मैंने बनाया है, right? I made it so that it's possible to get it without any random things and easy numbers. So कैसे किया आपने? Can you guys give me the idea? The basic stuff is, let me write it down. कितना वॉल्यूम रिएक्ट हुआ एसिड का? 10 है. ठीक है. Okay, now to get the millimoles of NH3, okay, how do I do that? I'm going to use M into V. I can also do it using N1V1. I can also do that, right? But ठीक है, let's do it from very very basics. अगर normality आपको नहीं मालूम है, let's assume whatever, for whatever reason, right? This is going to be moles of acid, molarity of acid times the volume, right? यहाँ पे molarity N factor is going to be 2. ठीक है, इसलिए दिस 2 into 1 into 10.
I have written on the left hand side over here millimole. Why? Because the volume is in ml. ये सब बेसिक चीजें करिए आप. You will be like, यार ये तो बहुत सिंपल सवाल है. Why is Ashish teaching me all this? I know this. If you know this, is great. But a lot of students struggle with stuff like this, which is why they go and mug some weird formula like 1.4 है कुछ वो formula आता है वो सब मुझे पसंद नहीं है. आप formula यूज करना चाहते हैं जरूर करिए, but my job is to tell you कोई formula की जरूरत नहीं है. ठीक है. 1 ml will have 1 millimole of N. How? Because 1 millimole NH3 में होता है एक atom of N, और let's say एक molecule, not even atom, एक molecule में होता है. तो 1 millimole NH3 will have 1 millimole N. यही मैंने यहां पे लिखा है शॉर्ट में. ठीक है. तो 20 ml will have 20 millimole. मास क्या होगा? 20 into 10 power minus 3. Now I am substituting. अभी तक मैं बिली लिख, now I am substituting into 14 gram per mole, which is the mass of nitrogen atoms. Right? This is the molar mass. Cool. So take that up there. What do I have to do now? I have to find percentage. Percentage क्या होगा? This mass divided by 0.35 into 100. Notice that मैं बार बार units लिख रहा हूं ताकि आप आराम से cancel कर सकें. And what do you get here, guys? What do you get here? Yeah, this is 2 times. This is 0.05 times. 0.05 क्या? 0.05. हाँ ठीक है. 7 to the 14, 0.05. So 2 into 20 is, एक मिनट, ये मैंने कुछ गड़बड़ी की यहाँ पे. नहीं सही है, ठीक है. So this is 80 into 10 power minus 3 divided by 5 into 10 power minus 2. ये हटा दो, ये हटा दो. So what you get? Hey, नहीं 80 नहीं, 40 यहाँ पे 4 हो गया. Okay, cool. This is 8 times and answer is 80%, right? Into 100. Awesome. ठीक है, 80%. All good, all good. Shivang? Oh, that's great. We have a funny guy here. Shivang, get a life, bro. If you think you're being funny, you're not. You're disrupting the class. You're, literally kalank ho tum in your first of your generation. So hold on. Let me report you very quickly, and then we'll get back to class. Hold on. Any doubts here, guys? Any doubts here? Please let me know if you guys have any doubts. Okay, let's move on. Milya, that's great. Yeah, Shlok, perfect. Excellent, excellent work, everybody. You're all smart, man. Yes, Neeti. All right. Tarun, yaar, I see you stopped asking me questions because my focus is its revision session. Okay? If you want to generally chat, I don't mind it. Ping me on I teach Chem. Right now, I'm not doing general crap. Okay? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको practical chemistry. So let's focus on that. Ping me here on Telegram or Discord if you want to just generally chat about chemistry. All right. So the answer for this is 80%. Let's move on to the next question. Mole concept, no formula required. Next one. 0.355 gram of an organic chloro compound gives 0.2870 gram of silver chloride in Carey's estimation. ये वाला भी मोल कॉन्सेप्ट हो सकता है. ये तो और भी ज्यादा सिंपल है. इनफैक्ट पहला वाला में थोड़ा एफर्ट लगता था, इसमें ये ज्यादा और भी ज्यादा सिंपल है. ट्राई करो. सो दीज आर ग्रुप 13 वाले, नॉट ग्रुप 13, दिस इज दैट चैप्टर यूनिट 13 वाले ही सवाल है, राइट? Carey's estimation is taught in that 13 unit. Don't worry, I'll quickly revise what Carey's thing is also. आगे वाले questions में we'll revise what is Carey's estimation. So if you haven't studied it, don't worry about it. All right, great, good. Yeah, Pratham, absolutely right. Formula यार क्यों? Why are you cramming extra formula? You don't have to. I know a lot of people teach it. मैं आपको बोल रहा हूँ आपको जरूरत नहीं है. अगर आप already formula जानते हैं, apply करिए. Feel free to do that. But I'm here to give you confidence. You don't need to. And do it without it. All right. धैर्य, और डेटा चाहिए? Alan, another guy who thinks he's funny. I will call out your name so I can report you and then remove you from here. ठीक है? और करो टाइम पास तुम लोग. Good fun. I have a very thick skin, guys. Anything you throw at me is like, I've been teaching online for more than 15 years. So bring it on, guys. Bring it on. There you go. Here is another one. सही है. आज ट्रोल ज्यादा आ रहे हैं. बढ़िया. Dharya, you don't need any more data. You can solve it with just this. Yeah, you can solve it with just this, Dharya. Let me just give you a hint. ठीक है?
You still feel you need data there? Yeah, let me know. मेरे हिसाब से इसको आप sorry, I was just checking if the chat stuff is working okay here. All right. Okay, Pratham. Good to know. Good to know. Try it out. Yeah, I was wondering how this is. I think my chat is being weird. One moment. So the deal is that ये भी हम mole concept करते हैं. I've given you a hint. Do you want me to give you more of a hint? If you want more of a hint, let me know in the chat that you want a hint, and I'll try and give you more of a hint. मेरे हिसाब से आप इससे डायरेक्टली कर सकते हो, but if you still feel कि you need a hint, type in the comments that you need a hint, and I'll help you out. All right. Shlok is saying 60%. Hold on, let me refresh my chat. Restore chat and pop out chat. All right, cool. Now the chat's working fine now. Okay. 60% says Shlok. Okay. All right, Nidhi, what do you think the answer is? Renuka is saying 40. Okay. Okay. I've got two answers. Anybody else want to try this? 60%, 40%. कैसे करोगे? There are two words here. Chloro compound, carries estimation. Okay, cool. So, okay, yeah, one thing that I did not give you, my bad on that, कि the mass of silver is Ag is 108. Sorry, that's on me. I should have given you that. Yeah, मुझे ये सवाल में देना चाहिए था आपको. It's unfair for me to not give you that. Yeah, okay. Pratham says 60, Shlok says 60, Renuka says 40. ठीक है. So, I need the molar mass of AgCl, right? I need that. क्यों? क्योंकि I've been given इतना mass निकल रहा है यहाँ पे. ठीक है. After that, it is just direct, what do you call it, unitary method. देखो, 143.5 gram AgCl has 35.5 gram chlorine in it, right? Because this is the concept of 1 mole. And how much will 0.287 have? I can get, if I get that, I'll get इसमें कितना chlorine है. Because to get percentage, I get actual कितना है divided by, you know, whatever. Sorry. Actual mass of chlorine divided by total mass, right? Into 100, etc., etc. So now I'm trying to calculate कितना chlorine है इसमें. So unitary method करो, you get this value to be some fraction. I'm not going to bother calculating it, right? We'll leave it to the end. That's also important. There's a point right here. After you do this, mass क्या होगा? Percentage mass will be x divided by 0.355 times 100. Why 0.355? Because that is the mass that's given of the organic compound. That's it. Multiply all of this together, you get the answer. So what did you guys get now? अब बताइए. Hey Rishi, how you doing? Try this out from here. Yeah, I've given you everything. You literally just have to maybe just, what do you call this? Substitute, है ना? धैर्य saying 20. 0.5 कैसे यार तेरा धैर्य? Yeah, I'm giving you, I've made these questions, guys. So, like, there will be no scary math. Because last time, I think when we did chemical equilibrium, उसमें बहुत अजीब number आ गए थे. So then I was like, let me change the question so that the numbers are easy to calculate and you don't waste time on that. At least in our sessions. 20 आ रहा है क्या? देख लेते हैं. कितना बार जाएगा? This goes once and this goes 100 times. And if you want specifically, actually, zeros कितने हैं? एक यहाँ पे, हाँ, this is like my worst nightmare. Zeros, right? 1, 2, 100. यहाँ पे और हो गया. ठीक है. ओके, तो ये हटा के 28.7 हो जाएगा. ये हटाओ, इससे 5 times हो जाएगा. 5 and this becomes 20. There you go, 20%. है ना? 20 answers. Yeah. Okay. Awesome. Rishi, there may be a formula, Rishi, but मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. ठीक है? This is important. जहां फॉर्मूले की जरूरत है वहां फॉर्मूला यूज करिए. जहां आप डायरेक्टली कर सकते हैं, भाई बॉदर. फॉर्मूला आपको अभी याद है, एग्जाम में याद रहेगा नहीं. We don't know. I really hope आपको याद रहे, right? I'm your supporter, ever well wisher. I hope आपको याद रहे. But कभी कभी एग्जाम में टेंशन में आदमी फॉर्मूला भूल जाता है. And that could be really scary, है ना? Anyway, you can do this without any formula. That's what I'm trying to do. It's okay, श्लोक होता है, no problem. Yes, all right, cool. फॉर्मूले होते हैं. I'm trying to tell you, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. मोल कॉन्सेप्ट है. ठीक है? मजा आ रहा है? सिंपल स्टफ है. You were like, यार कराने वाले थे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट. That's what I'm trying to prove to you. It is literally मोल कॉन्सेप्ट. खैर चलो, अब थोड़ा सा थियोरेटिकल इनऑर्गेनिक वाली चीजें कर देते हैं. When both nitrogen and sulfur are present in an organic compound, the sodium extract with FeCl3 gives you what? You've got 4 options. Yes, Yuvraj, absolutely.
Absolutely. It's okay, Shlok, no problem. Yeah, let's try this question out. Let's go try करते हैं. When both nitrogen and sulfur are present in an organic compound, the sodium extracted with FeCl3 gives green color, blue color, blue color, yellow color, and red color. What do you guys think? Please try it out. Red, Rishi, Dhairya. Easy, right? This one's very easy. Okay. Two of you being very sure about red. Okay. Pratham, Renuka are all saying red. Shlok, Jasbir, sodium thiocyanide. Sodium thiocyanide. Ah, okay. Jasbir, I like that. Jasbir. That's beautiful. NaCN, SCN. ठीक है, sure. But blood red specifically. Pratham, I like what Pratham is saying. Because sodium है, carbon है, N है, sulfur है. All of this reacts, give you NaSCN. Now that when it reacts with Fe3 plus, it gives you this beautiful compound. This is blood red in color. Okay, very easy question to start off with. थोड़े से हमने मोल कौन से सवाल देखे, then we saw this one. All right, let's move on. You're all brilliant. Nidhi, इसमें आंसर होगा red, not green. Yeah, because FeSCN whole thrice. Thank you for that. किसी ने पूरा फॉर्मूला लिखा. श्लोक, thank you for the whole formula. Yeah, that's what's formed. Awesome. ठीक है, सही है. अगला सवाल देखते हैं. देखो ये जेई में आया था. इसको मैंने कुछ बदला नहीं. I didn't mess around with this one. This came in JEE. मतलब you can also Google and tell me the answer, but please don't do that. In Carrier's tube, an organic compound X is treated with sodium peroxide to form a mineral acid Y. The solution of BaCl2 is added to Y to form a precipitate Z. Z is used for the quantitative estimation of an extra element. X could be what? Now, identifying कि what is being found out, क्या चीज detect हो रही है, that is easy. After that is biomolecules. All of these are from biomolecules, right? Nucleotide, nucleic acid, etc. And chlorozynilone भी आ गया, थोड़ा organic chemistry आ गया. Methionine, methionine, whatever, वो भी आ गया. अजीब चीजें आ गई. परसों मॉक में किया था. श्लोक says भी. Good job, Shlok, then I guess. E कहाँ है? E मतलब? What do you mean by E? There are only 4 options. Do you mean E कहाँ होता है? E is next to D. D क्या है? D is just a nucleotide. Pratham says B. Zishan says B as well. Okay. There I didn't understand your question. Yuvraj also says B. So you're all sure about B? That's lovely. That's great. Priya also saying B. So how do you guys get to B? Can you tell me what was the thought process that you guys took to get to B? Can you help me with that? Carrier's test क्या होता है? Let's revise. Let's do a bit of theory, right? Let's do that. Carrier's test क्या होता है? It's used to test sulfur or halogen. So this question is such that अगर आपने कर लिया, you'll know the answer. If you have not done this question, life could get a little hard very quickly. Okay, ठीक है. Let's write down everything that's in the question. एक थोड़ा thin slices वो करते हैं. Let's put it in a small place. ये तो बड़ा सा है. Put it in a small place. So this is either going to be a sulfur containing compound or halogen. यहाँ पे सवाल में दिया है, you have X, you have Na2O2, and then BaCl2 gives you Z, which is a precipitate. And you have fuming HNO3 and then AgNO3, right? That's what Carrier's test is. Carbon बन जाता है CO2, H बना है H2O, and X goes AgX. If it is a halogen. If it is a halogen, तब यहाँ नीचे लिखता हूँ, ऊपर तो actually क्या हो रहा है? This is for halogen. Why? देखो AgX precipitate white होगा तो chloride होगा. If it's yellow, then it's either bromide or iodide, etc. ठीक है. But यहाँ पे Ag है ही नहीं. देखो AgNO3 just not there. What could it be? But what is there? I know कि BaCl2 is added to form a precipitate. Now BaCl2 usually precipitate बनता है BaSO4 का, right? That you know from salt analysis. That is a confirmatory test of SO4 2 minus ions, not like indicatory test of SO4 2 minus. ठीक है. So it could be sulfate, which means कि it's possibly sulfur containing compound. The other option of Carrier's test is organic compound plus fuming HNO3. Instead of AgNO3, I don't have AgNO3, I have HNO3 and I have Na2O2. So what happens is S becomes SO2 और वो बन जाता है H2SO4, which is my mineral acid. And this confirms, we have done half our job right now. This confirms कि भाई, we are talking about a sulfur containing compound. We have covered half of this question. आधा सवाल हो गया है कि S है इसमें. Are you guys convinced? Some folks on the chat know that the answer is B. That's awesome. But for everybody else, are you guys okay with how we arrived that this is a sulfur containing compound? Yeah? Is that okay? What is Carrier's tubes? Zern, good question.
Are you able to follow what I'm saying? What is carriers tube? You can look it up online, right? But what is the experiment? I have told you, right? दो type के चीजें. If it's halogen, you put AgNO3 and Na2O2. If it is sulfur containing, you put HNO3 and Na2O2, right? Sodium peroxide, and you have all of these other steps. So we have confirmed कि ये sulfur है इसमें. Okay, now half our job is done. Once you have done that, Z is BSO4. Absolutely right. Absolutely right. Absolutely right. So what are all of these then? इसमें sulfur कहाँ पे है? Cytosine. I had fun with the NEET friends. I gave this question to my NEET guys, and the NEET students were very good at realizing cytosine क्या है, because it's in their DNA literally, right? A, C, G or T, जिससे DNA का structure बनता है, the nitrogenous bases. Yeah, one of those is cytosine, and there's no sulfur here. So for sure, ये answer नहीं है. This is the answer. Methionine, methionine is the answer. It's an amino acid. Now, say you don't know this formula, फिर भी आप इसको कर सकते हो. Okay, it's okay if you don't know this. There are 3 of them, by the way. Does anybody know what are the other sulfur containing amino acids? Anybody on the chat can tell me what are the other 2 amino acids? Yeah, कोई बता सकता है मुझे? There are 3 amino acids that have sulfur in them. Just a quick off-topic sidebar kind of a question. It's okay. Online देख के भी बता दो अगर नहीं मालूम है तो. किसी को मालूम है? They both starts with this CYS. Any ideas? Any takers for this? I know there's a bit of a lag between जो मैं बोलता हूँ और आपके तक जो आता है. So I'll give you cysteine. Says okay. One is cysteine. What about the other one? Thanks, Yuvraj. Lovely. Yuvraj says cysteine. What about the other one? दूसरा कौन सा है? Methionine, cysteine and तीसरा कौन सा है? नहीं यार श्लोक, याद करने को तो बहुत चीजें याद रखने की. इट्स ओके. अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो छोड़ दो. डजंट मैटर. थायो लिखा हुआ है. अच्छा, धैर्य सिंह थायो लिखा. Methionine, yeah. Methionine, yeah. Thio in the question, yeah, right, sure. The other ones don't have thio in them, okay, and the other one also has a weird spelling. Okay, cysteine, etc. Anyway, doesn't matter. ठीक है. चलो, I'm trying to prove to you कि नहीं मालूम हमको, मुझे नहीं मालूम है. Methionine से I can guess कि थायो लिखा है तो सल्फर होगा. Good job. But अगर नहीं मालूम है तो xylene. What is chloroxylenol? You have xylene, which is basically your good friend benzene with 2 CH3 groups. Now you can have ortho, para और meta. ये तीनों हो सकते हैं xylene का. Chloroxylenol मतलब एक chloro group और एक all group. There is no sulfur. Okay. तो इसको भी आप figure out कर सकते. This is not the answer. So I've eliminated A and C. I can also eliminate D. How to eliminate D? यार nucleotide. A is a nucleotide. What is ACGT? They are all nucleotides, right? Nitrogenous bases, etc. Nucleic acids, etc., etc. No sulfur. So I've eliminated A, C, and D. Hence, B must be the answer. Even if I don't know, even if I have not figured out, like somebody did, Thio मतलब S, obviously, right? वो अगर वो नहीं मालूम है, तब भी आप इसको arrive कर सकते हो the answer. What I'm trying to prove to you is that ये question डरावना लग सकता है, बहुत time लगने वाला लग सकता है, but you can quickly do this in 30 seconds also, right? I explained all the theory to you because मजा आता है कभी कभी. देखो एक जर्न जैसे पूछे थे कैरियर्स ट्यूब होता क्या है भला है. Maybe you have not studied NCERT, तो it's okay. थोड़ा रिवीजन हो गया 5 मिनट में. But you can do this question in 10-15 seconds just with this idea. ठीक है? All right. सलमान, पढ़ने का मन है तो पढ़ लो. सिलेबस पे तो है. नमस्ते ऋषभ जी, कैसे हैं आप? तीसरा याद नहीं है. युवराज, तीसरा I am really bad at organic and I told you how to arrive at what it could be, right? Even if you don't know that structure looks ऐसा दिखता है. देख यार युवराज, even if you don't know structure looks like this, maybe you're like CH3 यहाँ पे होता है. It's okay, doesn't matter. For the purpose of this question, it doesn't have sulfur, right? Chloroxylenol मतलब xylene, I think you need to mug, okay? All of these things. जहाँ पे 2 CH3 group, 3 CH3 group, मतलब benzene and adjacent compounds, it's good to mug, and then you can figure stuff out from there. Okay. How do we get sulfate as precipitate? Pratham, that's in salt analysis. You can go to the description and watch my videos on anion analysis. It's a KSP idea, right? BSO4 का KSP is very low, so it's precipitate. As simple as that. How मैं आपका मतलब समझा नहीं. How मतलब BaCl2 डालो, that's dissolves and BS4 does not dissolve. So because you get H2SO4 over here, ठीक है? Why this mineral acid is H2SO4? You react with BaCl2, you get BaSO4. Okay, and other stuff. ठीक है? Hey, I love chemistry. What's happening? Yeah, you missed some fun parts, but it's okay. You can look it up later. Here's another आसान सा सवाल.
जिसका आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 56 milligram of an organic compound containing nitrogen was digested according to Geldahl's method that evolved ammonia and it was absorbed in 20 ml of 0.1 molar HCl solution. The excess of the acid required 15 ml of 0.1 molar NaOH solution for complete neutralization. What is the percentage of nitrogen in this compound? Yes, Harshit, absolutely right. Absolutely right. Salman, whoa, I'm really blurry. Hold on. Salman, I don't know if you've been attending my sessions. I always do advanced का content in my sessions. Yeah, but now I will slow down. I will stop giving you advanced. इसमें भी एक दो सवाल advanced के हैं. But I was requested by a lot of people, यार mains का focus करो because JEE main आ रहा है. So maybe from now till JEE main we will do primarily JEE main content. But as soon as JEE main का पहला thing is over, we'll get back to doing a lot of heavy advanced का content. But I have been doing a lot of content advanced का in all my sessions. You can ask the people who have been attending my sessions regularly. I always do advanced का content. JEE main बोल के मैं advanced का content करता हूँ. It's okay, कर लो, पढ़ लो, ठीक है. All right. Yeah, I fixed it, Swani. Thanks. इसको try करो. This question came in JEE 2010. तो तुम Google कर सकते हो इसको. But I've changed the numbers. So if you're going to Google the question, please figure out the process. That's what I'm trying to tell you. I don't mind you looking up the question. It's not a test or anything. It'll be good if you know how the process works. ठीक है, मैंने numbers बदल दिए to make your life easy. Please try this. How are you doing, Swani? Yuvraj? Yeah. The question came in with slightly different numbers in JEE. 62.5 says Renuka. Dhairya says 12.5. Dhairya, I like your attention to detail. Dhairya. Renuka says 62.5. Dhairya is 12.5. Shlok is 12.5. Okay, 2 will give 12.5. Lovely. All right. All right, Nidhi. Thank you. Thank you so much for joining in. Yeah, Yuvraj, I know you have fun. You have fun. That's great. Yeah. In fact, when I started off, I was doing only advanced questions. And then I was told, yaar, itna mat karo. Some students like it, but then the crowd doesn't come. And because this is a marketing, like this is social media marketing, right? Like I'm marketing Byju's, Aakash Byju's, right? So their focus is यार ज़्यादा लोग जो होता है ना वो करो, तो इसलिए मैंने tone down थोड़ा कर दिया. But that doesn't mean I won't do it. ना मैं कर रहा हूँ. I've been doing the JEE advanced content. खैर, yes, Yuvraj, Pratham, Zishan, lovely. 12.5. सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा करना है. बट व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू रियलाइज, देखो दो चीजें यहां पे हो रही हैं. एक तो मैंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट किया. डाइजेस्ट मतलब व्हाटएवर, आई पुट सम केमिकल इन इट टू डिसॉल्व इट. दैट्स व्हाट डाइजेशन मींस. ठीक है, जेल्डाल मेथड है, कुछ होता है, उससे हमको अमोनिया निकलता है. नाउ दैट अमोनिया इज absorbed with HCl. Absorb मतलब react ना. What will happen? You have ammonia reacts with HCl, gives you NH4Cl. Right? This reaction is actually happening. This absorption मतलब this reaction. Okay. तो मैंने ज्यादा एसिड डाल दिया, एक्स्ट्रा एसिड डाल दिया. Okay. So कुछ एसिड रिएक्ट किया और थोड़ा बच गया. जो बच गया that reacts with NaOH and complete हो जाता है. So let me write that down over here. So I have 1, which is the quantity of ammonia. ठीक है. I add 2, which is HCl in excess. Then उसमें से जो है बचा होता है 3, that goes with NaOH. So basically 2 is equal to 1 plus 3. That's all. ठीक है ना? 2 मतलब पूरा HCl कितना हुआ, जो थोड़ा रिएक्ट किया NH3 अमोनिया के साथ, और बाकी जो एक्सेस निकला. दैट्स ऑल. ठीक है. सो आई एम नाउ इफ आई टेक इट टू द अदर साइड, इट जस्ट यू गेट अ नेगेटिव साइन. ठीक है. तो कितने यहां पे हुए? यू हैव HCl absorbed minus the amount of NaOH that reacts will give you ammonia कितना है, because that is my focus. From ammonia I will go on and get nitrogen. All of you already figured out, but let's do that very quickly. ठीक है. So 20 into 0.1 minus 15 into 0.1. As always, I'm doing millimole. Why did I do this? यहाँ पे luckily you all have monobasic acids and all that, right? Monobasic acidic stuff. ठीक है. I have NaOH and HCl, तो कुछ ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. तो कितना बचा? 0.5 मिलीमोल. एंड डायरेक्टली आई मल्टीप्लाई विद 14. व्हाई? बिकॉज NH3 में होता है एक एटम ऑफ N. ठीक है, इसीलिए मैंने ये 14 ग्राम पर मोल डाला है. नाउ दिस मास दैट आई गेट विल बी इन मिलीग्राम. Whatever mass I get, I am not calculating. Whatever mass I get, I'll get milligram.
परसेंटेज क्या होगा, ये मिलीग्राम है, ये भी मिलीग्राम है, कैंसल आउट हो गया, है ना। नाउ योर लाइफ इज इजी, 7 times 2, 7 times 8, 2 by 8 is 4, 5 by 4 into 100, this is 12.5. ठीक है, ऑल राइट। धैर्य, जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस बोले तो कहां मिलेंगे धैर्य, वो सब बायोमोलिक्यूल्स में है यार, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, इट्स ऑल इन बायोमोलिक्यूल्स। थैंक्स रेणुका, एब्सोल्युटली, थैंक यू। सो वो वाला जेई का सवाल था, राइट, उसको मैंने कुछ बदला नहीं था। मैं आई एम मोस्टली ट्राइंग टू गेट यू यूज्ड टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में मैं थोड़ा बहुत बदल रहा हूँ। दोस क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली एज इट इज पीवाईक्यूज। ये वाला सवाल AIEEE का आया था 2010 में, ठीक है, तो थोड़ा एफर्ट लगाना, नॉट एज डायरेक्ट, राइट, डायरेक्ट फॉर्म में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लाइक अ बैक टाइट्रेशन जो बोलते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेई का सवाल है। When a solution of mixture that has two inorganic salts was treated with freshly prepared FeSO4 in acidic medium, a brown ring test was formed, whereas on treatment with neutral FeSCl3 gave deep red color which disappeared on boiling and a brown red PPT was formed. Direct bro, this is directly from your lab manual जो मैंने आपको दिखाए थे, बहुत ढेर सारे lab manual, वहीं से डायरेक्टली है, देखो उसको ट्राई करो। While you do that, I will also explore the lab manual where this came from and try and show you कि भाई exactly यहाँ से आया है, रुको कहाँ गया वो, where is it? Too many PDFs open. खैर तुम लोग देख लेना, don't be lazy. I'm still looking though. I'm going to spend like 30 more seconds if I find it good, otherwise oh gosh, कहाँ गया ये qualitative analysis? इसको देखते हैं, क्या देखना था हम लोग को, मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, कोई मिल गया, बी 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 बी, ड्रैगन ब्रो, ड्रैगन ब्रो, what do you want in the previous page? Here, previous page, Dragon, are you happy? How long do you want this to be here for? Dragon, I'll give you these slides, तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, maybe you're new to this, but on the Telegram channel, I'm going to give you these notes, you can download those, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग solve करो, बढ़िया। All right, anyway, here is the funny thing, right, all of you are saying B is right, that's awesome. Here, look at this, NCERT भाई साहब को देखिए, word to word, I mean, like tears of joy are what are coming in my eyes right now. और कितना आसान चाहिए यार तुम लोगों को पेपर, तुम लोग रोते हो जेई मुश्किल है, इज दिस हार्ड ब्रो, लाइक लुक एट दिस, मेरे सर के ऊपर देखो, पढ़ो, शब्द एक एक शब्द एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है, एक एक शब्द, डीप रेड कलर्स अपीयर्स विद डिसेबल एंड बॉलिंग, oh my gosh guys, oh my gosh, it's all right, see this is the difficult one, CSCO minus, नाइट्रेट तो पक्का होगा, कोई बोल रहा था, है ना, कहाँ है नाइट्रेट का, ब्लू कलर, ठीक है, इसमें ब्राउन रिंग वाला नहीं लिखा है, लेट्स सी, ब्राउन रिंग कहीं ना कहीं तो इसमें भी होगा, सल्फाइड NO2 minus, NO3 minus, hold on, I'm proving to you guys, it's important कि life is very very easy, it's not that difficult, ये देखो आ गया, ये देखो, word to word brown ring test. Or we all know the answer is B guys, that's cool, but I'm trying to prove to यार NCERT में है, okay, ठीक है, please यार NCERT पढ़ लिया करो, okay. This brown ring test, if you've done in the lab, it's a beautiful simple ring that gets formed, okay. Nitrates in presence of acidic medium usually oxidizes to Fe3+, but I have Fe2+ in excess, okay. This when reacted with this gives you this. Now this is very cool. By the way, let me tell you something interesting. Back in 2002, something fascinating happened. And if you are on Telegram, you already know what I'm going to talk about. So Yuvraj and Shlok, मत बोलना कुछ। एसिडेट के लिए वो वाला टेस्ट याद है जो 2-3 ड्रॉप पानी डाल के उसका पेस्ट बनाते हैं, अगर पेस्ट बनता है गिव्स फ्रूटी विनेगर लाइक स्मेल, अरे वाह, एब्सोल्युटली राइट श्लोक, लवली, या एग्जैक्टली निधि, एब्सोल्युटली राइट, you're also right.
Okay. Shlok knows what I'm going to say. So you're already saying +3. What is the what is the oxidation state of iron in this, guys? What is the oxidation state of NO and iron in this? कोई मुझे बता सकता है? श्लोक ने लिख के तुरंत वेपराइज कर दिया. Detracted the answer. चैट में प्लीज बताएंगे मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट आयन का क्या है और NO का क्या है इधर इस कंपाउंड में. प्लीज बताइए. ये इंटरनेशनल चाइनीज ओलंपियाड में रिसेंटली सवाल पूछा गया था. ठीक है. I can also no, I don't have Discord on this. It's from a friend. I'll show you that question maybe on Telegram. Ping me on Telegram and I'll give you all of that. यहाँ पे क्यों time waste करें, right? Ping me on this if you want to know what I'm talking about. But if you guys want to solve advanced, कोई पूछा advanced के सवाल, solve the international Olympiads, Chinese Olympiads, international Olympiads को solve करो and you're sorted. ठीक है? You are silent. There says +1 on both. Okay. There, since you have taken the interest, thank you so much for helping me out. The answer is +3 on this and -1 on this. It would be +1, but it gets oxidized because it's not stable. That state is not stable. It goes to +3, and this business NO plus goes back to NO minus, right? That is the actual answer. अब JEE में तुम लोग को जो लिखना है तुम लोग लिखो. Not important to me, right? I know like JEE is not important. यार 2002 में एक पेपर आया था, okay, which proved that it is +3 and -1. ठीक है? It is not +1 and +1. But जेई के लोग सब लोग पढ़ाते हैं +1 और ये 2002 में आया था. मैंने जेई लिखा 2006 में. मैं तब से until a few days back I was bugging this +1 पढ़ा भी रहा था. फिर एक स्टूडेंट ने मुझे दिखाया, ये दिखाया आया था ये इधर एक चाइनीज ओलंपियाड में एंड इसका this is the value of what you call it Bohr magneton. So how is that possible? How can it have 3 electrons only, right, in the d orbitals अगर ये +1 है? खैर, it was a very interesting thing to talk about. You had given NSCSE? That's lovely, Priya. That's great. That's lovely. That's lovely. Khair, brown ring का ये सब drama है. If you want to know more about this, it's very exciting stuff. Ping me on I Teach Chem. I'll share the paper with you guys. I can also share it with you here actually. Hold on. Let me share that paper with you right here. Why do you want to like get another app just for that? एक second. अगर आप already हो, feel free to ping me. अलग-अलग चीजें खुल गई. Just give me 1 second. Hey guys, do you have that link? PDF का link जो मैंने आपको भेजा था? युवराज, श्लोक, anybody? I don't remember where it's at. कहाँ डाला था? बहुत चीजें जनरल में था. कहाँ पे था? मिल गया. Found it. No, that's not the paper. The paper is here. Bear with me for a second. Trust me, this is awesome. It's really fun to read this. Paper थोड़ा भारी है, but you can also check out the chemistry stack exchange discussion if this thing interests you. Yeah, it's fascinating, man. I was like, it was insane. Yeah, this is the actual paper that tells you how it is +3 and -1. हाँ यार, धैर्य. मैं बोल रहा हूँ मैंने जेई दिया था 2006 में, राइट? और तब भी मुझे +1 पढ़ाया गया था. अभी +1 पढ़ाया था. A few days back, a student who gave the Chinese Olympiad, because he got that question wrong, he was like, भाई ये देख ये हुआ था. I was like, oh, that's insane. Yeah. हाँ, because JEE में +1. हाँ यार, नहीं, I don't think JEE will do that. नहीं, I trust JEE, right? They will never do this. If they ask a question, you give +3. Don't give +1 as the answer. Yeah, trust me on this. And अगर आपको marks ना दे, challenge करना. Give this paper to them. See, I trust these guys. They are scientists, right? They will not mess something up like this. इतनी बड़ी चीज वो लोग नहीं mess up करेंगे. तो ठीक है. Anyway, JEE में नहीं पूछा, कोचिंग में पढ़ाते होंगे, but JEE में कभी ऐसी गड़बड़ी नहीं करेंगे. I trust JEE completely with that. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. ठीक है. All right. Oh, that's awesome, Pratham. That's very crazy. That's lovely. I've given you links to stuff. Okay, anyway, CaCO minus ka reaction if you want, it's this, and this is the complex that's formed that gives you that weird color. And then when you heat it, you get this. Okay, this is the precipitate right here. Yeah, this is the one that disappears on boiling. This is the deep red color one. ये सब चीज है NCERT में, but ठीक है, if you want these notes, you can look at these as well. All right, let's go on to the next question. मजा आया उसके बारे में बात करने के लिए. The cation that will not पत्थर की लकीर. नहीं यार, it's okay. Trust me. ये paper, scientific paper is पत्थर की लकीर. JEE is not पत्थर की लकीर. The cation that will not be prescribed by H2S in presence of dilute HCl is what? Please try this out. Please try this out. Hey, we all learn something new every day. Nature is fantastic, isn't it? And I'm not taking any credit for this. I was so fascinated, I told these guys on Telegram, and then I'm sharing with you guys. They were like, whoa, blow my mind kind of a moment.
What do you think about this one? Slok and Dhairya saying C. Okay. Baki log? What do the rest of you think? युवराज प्रथम आए पढ़ के आए हो तुम लोग सॉल्ट एनालिसिस? बढ़िया. Lovely, lovely, lovely. Shlok giving us logic. A and B are second group. वो होंगे precipitates, so C is the answer. Cobalt in fourth group. Absolutely right. Thank you, Shlok. Absolutely right. तो मैंने यहाँ पे लिखा है H2S का ये रिएक्शन, ठीक है. Now, as soon as I put HCl, there is a common ion effect. HCl से आता है H plus और Cl minus. मतलब कि जो concentration है इसकी वो कम हो जाती है. If I decrease the sulfide ion concentration, then I need to have a very small KSP value. Small KSP value वाले salts will precipitate. Small KSP value के salts कौन से हैं? ये और ये. क्यों? Because as my good friend said, they are in group 2. This guy is in group 4. It has a higher KSP value. If you want to know the actual values, you can look it up online. ये 10 power minus 21 के order है. This is 10 power minus 28. Like several orders of magnitude का फर्क है. ठीक है? You don't have to know the numbers. कोई जरूरत ही नहीं है. Because you just have to know कि ये तीनों, as Shlok said, are group 2 and this guy is group 4. Group 2, group 4 का मतलब क्या है? यार, ये तुम पढ़ लो. इसको बग मत करो. Please. Yeah? There is a concept of ionic equilibrium. है ना? Ionic equilibrium से ही पता चलता है कि common ion effect होता है. मतलब इसका जो concentration कम हो गया, etc. etc. If you find this to be new, please go through my sessions on equilibrium और read NCERT. कहीं ना कहीं से salt analysis में बिना वो किए life मुश्किल होगी. Too much to mug without that. So anyway, group 1, 2 में नहीं होगा, group 4 definitely होगा. ठीक है? I think Pb2 plus group 1 में शायद आता है ना, copper और arsenic 2 में आते हैं. Either way, doesn't matter. Group 1 और 2 नहीं होंगे. Pb also can precipitate out as sulfide. Anyway, let's move on. Cobalt 2 plus is the answer to this one. Good job everybody. Time है क्या? अरे यार, we out of time. इसके बाद क्लास है आप लोगों की. 1 बजे क्लास है. 1 बजे क्लास है ना? What do we do, guys? बहुत सवाल बाकी हैं. कितने करें अभी? Let's do 1-2 करके देखते हैं. जितना हो जाए कर लेते हैं. ठीक है? Upon treatment with ammoniacal H2S, the metal ion that precipitates sulfide is, ध्यान से करना है वाला, ध्यान से करना. ड्रैगन ऑफिशियल भाई साहब, नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे. Yes, absolutely, निधि. युवराज देखते हैं, जितना कर सकते हैं करेंगे. ठीक है, will do. No idea? अरे ट्राई कर यार, श्लोक कर सकता है. Trust me on this. Try it out. Read the options carefully. You can try it out. Dragon, hold on, bro. I'll give you the link to the Telegram official Byju's वाला Telegram वाला चीज. Notes वैसे इसमें I'll post it on this link itself, यहीं पे आ जाएंगे. But I'll tell you where it comes. It's a simple thing. It's JEE Aakash. You just have to go to Telegram, search for JEE Aakash. This is the link. Yeah, this is the link of the official channel. You'll get all the notes there. DD says Dhairya and Renuka. Okay. श्लोक ट्राई कर देख. सेम चीज हो रही है. सेम कॉन्सेप्ट. H2S, but now what is ammoniacal H2S? Ammoniacal मतलब you have NH4OH and NH4Cl. This is a buffer with a basic pH. Why? Because I've got a weak base and salt of conjugate acid. Sorry, conjugate. Yeah. How do I know this is a basic buffer का pH? Well, think about it यार. वीक बेस मतलब उसका कुछ होगा, कुछ 10-11 के आसपास. इसका भी जो है ग्रेटर देन 7 होता है, क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट, राइट, इक्विवेलेंस पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट. एट इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब इफ आई हैव ओनली NH4Cl इन सॉल्यूशन, इट विल बी ग्रेटर देन 7. इसका इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली अराउंड 9 या 10 के आसपास है. सो दिस विल फॉर्म अ बेसिक बफर. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. व्हाट डज बेसिक बफर मीन? बेसिक बफर मतलब कि आई हैव OH माइनस आयंस एक्स्ट्रा, तो ये दोनों कंज्यूम हो जाते हैं, तो इसीलिए सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. सो आई एम इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस. तो द मेटल दैट विल प्रेसिपिटेट हैज टू बी इन ग्रुप 4. दैट्स इट. श्लोक एंड एवरीबॉडी एल्स, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इटसेल्फ. लास्ट क्वेश्चन में था कि फोर्थ वाला नहीं होगा, इस वाले में फोर्थ ग्रुप होगा. इन दिस वन द फोर्थ ग्रुप विल प्रेसिपिटेट. नाउ फोर्थ ग्रुप है क्या? दिस इज वेरी गॉट बी केयरफुल.
it's Fe2 plus that's in the fourth group. Okay, 3 is not in fourth group. Aluminum तो नहीं है, magnesium तो यार कुछ fifth group पे है, zinc is the only one that's in fourth group. That's the answer. ठीक है, you make aluminum syllabus में नहीं है, हाँ ठीक है aluminum syllabus नहीं, aluminum है syllabus. What are you saying? Aluminium, this precipitate has OH minus, this guy too, right? All of these precipitate has OH minus. Zinc 2 plus, Ni2 plus, Mn2 plus, this is that buff wala color, Fe2 plus and cobalt 2 plus, all of these guys precipitate as sulfides. ठीक है? Yeah, magnesium with a bicarbonate and zinc is your answer, which enough it has reached KSP, you know, like the S2 minus is enough to precipitate this, because OH minus basic medium में solubility बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ती है. ठीक है? ओ अच्छा, क्वेश्चन आता है, क्लास का तो आइडिया नहीं. 1 बजे शायद नितिका की क्लास है, आई थिंक. या ओके, आंसर इज डी. ड्रैगन भाई ठीक है. प्रथम, निधि, युवराज, श्लोक, प्रिया, रेणुका, धैर्य, वेल डन, एक्सेलेंट वर्क एवरीबॉडी. लॉजिक समझ में आया क्यों है आंसर डी? आई थिंक सेशन तो है यार, एक रुको देखने दो. वेयर इज द जेईई टीम? हाँ, 1 बजे नितिका का सेशन. कूल, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. अगर जल्दी हो जाता है विल डू वन मोर. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ओके, a gas X is passed through water to form a saturated solution. The aqueous solution on treatment with silver nitrate gives a white precipitate. अरे यार ये तो हो गया, यहीं से हो गया. The saturated aqueous solution also dissolves magnesium ribbon with evolution of colorless gas Y and it for X and Y. This is also PYQ. I think JEE something 23 का था, 23 या 22 का था शायद. So yeah, try it out please. I think ये वाला भी हो जाएगा. Very easy question. Easy in a sense, doable. Let me call it doable. It's not that easy. You're gonna have to study it. मतलब आपको पढ़ना जरूरी है. Yeah. Yeah. All right. X is Cl2. Yes, X is definitely Cl2. Thank you for that. So इसको हम लोग cancel out कर देते हैं. Dragon says B. Pratham says B. X is Cl2. Okay. Okay. Renuka also says B. Good job, Shlok. X is definitely Cl2. How do you know? Because यार white precipitate है तो क्लोराइड भी होगा, है ना? AgCl के साथ AgNO3, ये जो white precipitate मस्ट बी क्लोराइड. कलर्ड होते हैं ना, ब्रोमाइड आयोडाइड के कलर्ड होते हैं, येलो वाले एटसेट्रा एटसेट्रा. So what does this guy do? This guy, okay. It dissolves a magnesium ribbon. देखो, this is interesting. Now this reaction that I'm going to write over here is iffy because why on earth would, you know, Cl2 get formed in the first place? So it could get confusing as to what on earth is going on over here. Let's read this one more time. Gas X passed water comes from a saturated solution. The gas itself. हाँ, तब then we are good. Chlorine gas, yeah, ठीक है. This is good. Saturated aqueous solution मतलब कि हाँ, this is fine. Cl2 plus water gives HCl and HOCl, and then this with AgNO3 gives you this precipitate which you already figured out is white. And भाई साहब, carbon dioxide कहाँ से आएगा? Where will carbon come from, guys? If you have identified कि chlorine, then the answer has to be C, no? Where is carbon going to come from? CO2 क्यों होगा? Think about this, please. First principle से. Why will you get C? It has to be H2. अब पता नहीं कैसे होगा H2, but it's not CO2. ऐसे होगा H2. ठीक है? Cool. This is the answer. Can't X be HCl gas? Okay. It could be, but it's not in the options. I see why you're saying it could be HCl. Sure. It could be HCl. Just reading it through, फिर से मैं देख रहा हूँ, anyway for not to be HCl. Sure, dude. Could be HCl, but option में नहीं है ना? First class chlorine, second class is gas is hydrogen. Yeah. हाँ युवराज, exactly. That's exactly what I'm saying. Carbon बोला कि नहीं होगा यार, carbon तो नहीं होगा. That's exactly my logic as well. Yeah, you don't have to spend this much time doing this question. I'm spending time because yeah, it's my job. I'm a teacher, right? See, I have two modes. One is the teacher wala mode. The other is solving question wala mode. वो पुराना वही 2006 JEE वाला.
When you're in that solving वाला mode, भाई, you have to be brutal, completely brutal. सोचना नहीं है. You're trained. You're like a trained. I don't want to say assassin because that's glorifying assassinations, which is stupid. You're yeah, you're trained to do stuff, right? For the last 2 years or whatever, maybe 3 years, you've been studying, and you're sure कि ये करना है. Go ahead, mark it, move on. All right, chalo. Won't take too much of your time. Take a break. Breaks are extremely important as actual questions. I'll give you one last question as a homework, maybe. We'll hold on. ठीक है. Let's take this as a homework question. I know ये JEE में already आ चुका है, but all right, ठीक है. चलो मिलते हैं हम लोग Thursday को. What are we going to do next? On Thursday we are going to do ionic equilibrium, fun stuff, more fun stuff. And remember, focus is JEE main. उसके हिसाब से मैं करूंगा. I will refrain from doing JEE advanced content at least for the next 15-20 days. But if you want to do more JEE advanced content, you will get enough links. जो already कर चुका हूं, आप उसको वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, चलो मिलते हैं Thursday को. Srimai, what's up? Hi to you too. Slok Dhairya giving answer already. Lovely. Take a good break. थोड़ा टहल के आओ. अगर थोड़ा बहुत कुछ स्नैक खाना है खा लो. 1 बजे नितिका जी क्लास देखो. Have fun. ठीक है. Slok, I'd like to do so यार, but it's already 12:35 and I'm a stickler for time. I don't mind extending बाद 10 मिनट. एक और क्लास है ना, ब्रेक ले लो यार. ठीक है, चलो मिलते हैं. सही. 13 April shift 1 का क्वेश्चन. वाह बाप रे श्लोक. श्लोक इज ऑन फायर. I love it. ठीक है, मिलते हैं फिर थर्सडे को. बाय, हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल ऑफ दैट. टाटा.